बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र-ए-नौ। आज हमारा वीकली प्रोग्राम जो है वो एम्बेसडर कामरान शफी साहब के साथ है। तारुफ की ज़रूरत नहीं है, आप फेमिलियर हैं, जानते हैं उनको। तो सीधा ही हम जो है उस क्वेश्चन पे चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो इतना लंबा क्यों होता जा रहा है, व्हाई इट इज टेकिंग अ सर्कुलर राउट, और अब वो किसने कहा कि 8-9 दिन लगेंगे, तो इसके पीछे है क्या। तो सर आप पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान कहता है कि रेवोल्यूशन इज कमिंग, इट मे बी थ्रू द बैलेट और थ्रू अ ब्लड शेड। So, what do you say on that? Is this revolution coming? Is it some kind of जबकि वो खुद भी जो है he is going back and forth for the deals and धरना छोड़ के भागता है लाहौर में कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। उसके वो खुद डिनाई करता है, लेकिन बाकी जो उसके लेफ्टिनेंट्स हैं वो सारे कहते हैं कि जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए छोड़ के वो लाहौर जाना पड़ा उनको जल्दी। तो अभी जो है वो कल से जो बात कर रहा है वो बड़ी सख्त किस्म की बातें कर रहा है। तो क्या इससे ये इंडिया लिया जाए कि वो उसकी जो डील वाली बात है वो नहीं मानी जा रही? तो इस पे सर आप जरा रोशनी डालिए, क्या क्या हो रहा है। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सारों को मेरा सलाम पहुंचे, आपको मेरा जी। थैंक यू। देखिए ये एक बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है, तमाशा ही मैं कहूँगा ऐसे। यानी जिस नेज पे ले गया है पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो नहीं है, दिस वायलेंट डिस्कोर्स इमरान खान, वो तो कभी हमने अपने मुल्क में देखा ही नहीं। और जैसे कि इदारे चुप हैं इस सारी चीज पे, मुझे तो दाल में बहुत कुछ काला लगता है। अभी देखे ना, जरा पीछे देखे थोड़ा सा जी। मियां नवाज शरीफ ने क्या क्या किया था, इतनी बड़ी क्या गलती थी कि वो डॉन लीग्स बन गया, फलाना ढिमका, ये वो इतना ही कहा था ना कि देखिए ये जो हमारे जो है ये प्रॉक्सीज, उनको यूज करना बंद करें, जिहादी आउटफिट्स। जी जिहादी आउटफिट्स को यूज करना बंद करें, ताकि क्योंकि दुनिया हमें देख रही है और अभी टाइम है मुफाहमत का, अभी टाइम है फ्रेंडशिप का। उन्होंने हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ और क्या हुआ, वो गद्दार फलाना ढिमका, ये वो मोदी का तो यार है, वो गद्दार है फलाना। और वही चीजें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहीं 2.5 साल बाद इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, वही चीजें। तो और क्या क्या उन्होंने इबरत का निशान बनाया नवाज शरीफ साहब को, उनके बच्चों को। आपको तस्वीर याद है, हुसैन बैठा हुआ वेटिंग फॉर हिज, और वो कैमरा से तस्वीर लेके, यानी सिर्फ बेइज्जती करने के लिए। जी सिर्फ तो उसको देख ले, और यहाँ देखें क्या कर रहा है इमरान खान, और कुछ चूं भी नहीं निकल रही किसी से, बल्कि इतना कि DGIS खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये बात सिर्फ उल्टी सीधी है, बिल्कुल उल्टी सीधी है। एंड आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हियर कि इस टू दिस एक्सटेंट the man can go to this extent to ask for a mutiny within the army and nobody says anything, and not the judiciary, not the government, nobody. ये क्या किस किस्म की बात है ये। लोग कहते हैं जी बहुत बड़ी सपोर्ट है इमरान खान की। भाई सपोर्ट तो तब नजर आएगी ना जब आप उसको बंद करेंगे MPO के नीचे 7 दिन के लिए, फिर सपोर्ट आपको नजर आएगी। कि लोग निकलते हैं, जलाते हैं शहरों को, आपके पास नहीं है हथियार रोकने के लिए। क्या तमाशा बनाया हुआ है। वो सर इसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो रूलिंग आ रही थी उस दिन, उस पे भी कई लोगों ने कहा था, बल्कि अयाज अमीर का ट्वीट था कि अगर कोई नेगेटिव इमरान खान के खिलाफ आया तो पूरा मुल्क जो है वो आग में जलेगा और इमरान खान भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो वो क्या जजमेंट आया, और वो जजमेंट आया, डिस्क्वालिफिकेशन का आया, और DCP उसको कर दिया। चू नहीं निकली किसी से। और ऊपर से क्या हुआ कि इमरान खान ने 10 बिलियन रुपए का दावा कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बताए ये कोई मुल्क है या तो क्या तमाशा बना हुआ है। और आप देखें कि राय जी सिर्फ हमारे मुल्क के लिए ये बाहर जो लोग हंस रहे हैं हमारे,
वो एक बंदा है रॉ का आर्या मेजर गौरव मेजर, आर्या। हाँ जी, जी हाँ, हाँ। उसने उसने ट्वीट किया कि जी ये बहुत अच्छा हो रहा है कि इमरान खान खुद अपने आर्मी चीफ को गालियां दे रहा है, अपने पॉलिटिशियंस को चोर कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है कि वो सारे भेड़े हैं। तो मैं बिल्कुल जी करने को तैयार हूँ डोनेट, और मुझे बताएं किस बैंक अकाउंट में भी। नहीं, उधर दैट इंग्लैंड में, लंदन में इंडियन फ्लैग्स और पीटीआई के फ्लैग्स बाहर निकले हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, और बाजवा साहब को गालियां पड़ रही है लंदन के अंदर। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ मंकीज आर वी मेकिंग ऑफ आवरसेल्व्स? बात ये है, क्या बंदरों की तरह हम लगे हुए हैं, जैसे किसी बांदर को आप पकड़ा दें उस तरह, और बंद कमरे में बंद कर दें लाइटें ऑफ करके दो बंदरों को, तो वो क्या करेंगे उस तरह के साथ? और इट्स साथ इट्स में, अनटेनेबल, और कंप्लीटली अनटेनेबल एंड कंप्लीटली को ट्रैजिक। दोनों बंदरों को उस तरह भी साथ साथ दे दें ताकि वो एक दूसरे को, एग्जैक्टली, और यहाँ पे ये हो रहा है। लाइटें बंद कर दें, एक कमरे में बंद कर दें। हमारा तो वो हाल बना हुआ है, और सबसे बंदर ये बना हुआ है इमरान खान, एंड एवरीबडी इज ऑल राइट विद इट। कमाल की बात। दैट्स सरप्राइजिंग। सर, ये स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है, मतलब कि आफ्टर हैविंग रिएक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स, स्टेट डिपार्टमेंट का भी कल ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि इमरान खान का जो एलिगेशंस हैं, देयर इज नो ट्रूथ इन दैट, और उसने ये कहा कि वो इसकी जो इसकी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन विल काउंटर इट विद इंफॉर्मेशन। और साथ में ये भी कहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान से विल रिमेन एंगेज फॉर आवर पॉलिसी इंटरेस्ट। और ये इस पे सर क्या कहेंगे, विच वे द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग, और खास तौर पे जब वो ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है अमेरिका ने साजिश की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सारा जो है वो झूठ सारा वो डिबंक हो चुका है, लेकिन उसको वो भी कह रहा है, अमेरिका को भी कहने की जरूरत पड़ी है। तो वेयर डू यू सी दिस गोइंग? So it's going in just the wrong direction. Where else? I mean, the point is, the United States has been a friend to Pakistan. We have been in it together in the during the Afghan war and so on and so forth. They've given us so much aid over the years. F-16 को देख लें, उससे पहले देख लें 1951 में जो उन्होंने aid हमें दी, and constantly they've been helping us. And of course, they will do it for their own reasons. And why not? All countries do it for their own reasons. Mm-hmm. But this is so stupid of this man to go on accusing the US on a complete lie, a total lie. और उसमें क्या हुआ कि एक अच्छा भला एम्बेसडर हमारा डॉक्टर असद खान, उसको he just threw him under the bus. And you know, it boggles the senses कि उसके दिमाग में कैसे ये चीजें जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी जरूरत नहीं हो सकती इतना कहने का, अगर उसके पीछे एक पवा ना हो, बहुत बड़ा पवा। और वो है, and that is why nobody moves. I mean, why isn't our superior judiciary, my lords of the Supreme Court and the high courts, act? Why is every judgment coming out in his favor? Why? ये तो पूछने की बात है ना। हालांकि जब मियां नवाज शरीफ की बात थी, तो आपने तो एक सुपरवाइजरी जज लगा दिया ऑन द जेआईटी कि तुम देखोगे जल्दी काम खत्म करें, और साथ ये भी था कि और इनको कमिट करें मियां साहब। अच्छा, give a deadline. Yeah, exactly. Give a deadline to complete your trial by this time and give the judgment. Exactly, and then knowing full well that Imran built his mansion in Banigala. I spell it Bunny, Banigala. Usme, you knew perfectly well it was a state land. He had no business to be building it there. वो 12 लाख रुपए लेके उसको कर दिया सादे गौरवी, और बाकी सारे चोर हैं। और अभी क्या कह रहा है इमरान खान? कह रहा है कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी से बताया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और फलाना ढिमका चोर है। यानी तुमने तस्दीक नहीं की, तुमने खुद ऐसे बकवास कर दी जो उन्होंने तो बताया, कान में डाला। वो कर ही जा रहा है। हाँ, क्या ही जा रहा है। आज मेरे ख्याल है मरियम बीबी ने भी यही बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यानी वो व्हाट सॉर्ट ऑफ मंकी लैंड है बिकम यार, कोई बात है? अच्छा, अभी वही लोग कह रहे हैं कि तुमने वो हार बेचा 22 करोड़ का, 2 करोड़ का लेके, तो तुम चोर नहीं। वो घड़ी एक शहजादा तुम्हें देता है, एंड यू गो एंड सेल इट इन द बाजार,
and it goes back to him. Goes back to him. That's really embarrassing. Because when he found out, क्योंकि ऐसी घड़ियां तो 8-10 ही होंगे ना पूरी दुनिया में. हाँ, ग्राफ की घड़ी है सर, वो तो वो हैंडक्राफ्टेड घड़ी थी. उसको जब पता लगा, उसको जो हैंडक्राफ्ट करता है या जो बेचता है, उसको कहा कि योर हाइनेस, तो घड़ी मेरे पास आ गई. उसने कहा मुझे वापस €2 पैसे. यानी what a monkey he's made of us in every way, with every country. किसके साथ इसकी छोड़ी है हमारी रिलेशंस सही बताएं. काउंटर क्यों नहीं किया? मतलब काउंटर जो कर रहे हैं उसका मतलब वजह क्या है? एक तो पीएमएल की जो है सोशल मीडिया वीकनेस है, और इमरान खान के जो साइड है उनकी तरफ से तो बिल्कुल मतलब कारपेट बॉम्बिंग और रैपिड फायरिंग होती है. वहां से एक बात मिलती है उनको और वो मतलब लाखों में जो फैलती है. बिल्कुल, तो एक वजह तो ये है कि सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस जो है वो कमजोर है. पीडीएम की, पीएमएलएन की, इवन हमारे डीजीआईएसपीआर की जो है प्रेजेंस वो नहीं है. तो इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट रिएक्टिंग? व्हाई द एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट रिएक्टिंग प्रॉपर्ली? I have no idea. I have no idea. As a matter of fact, they said today on Naya Dot that they have Pakistan radio, they've got Pakistan television. How come they're not reacting? Why are they not reacting? बल्कि अगर आपने देखा होगा तो तीन एक हफ्ते पहले मैंने ट्वीट किया था कि आप क्यों इसे इमरान साहिब, खान साहिब, ये सारे जो मिनिस्टर हैं हमारे, जो भी बात करते हैं इमरान खान साहब, जब वो कह रहा है ये चोर डाकू, नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ डाकू, फलाना ये फलाना वो, और आप उसको खान साहब कह रहे हो. उसको टिरियन का अब्बा बोलो. उसको बोलो कि तुम वो आदमी हो जो अपनी बेटी को नहीं पहचानते. उसको ये कहो कि तुम बॉल टैंपरिंग के दादे हो, तुमने शुरू की बॉल टैंपरिंग इन क्रिकेट, तुम चीट हो. आप क्यों नहीं ये कह सकते? व्हाई कांट यू काउंटर हिम? क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम तो उसने सेट किए हैं. मियां नवाज शरीफ के मुंह से तो मैंने कभी नहीं सुना इमरान खान. नहीं, इमरान खान साहब, और उसको देखो गालियां दे रहे. मरियम बीबी को क्या नानी, क्या नानी तुम्हारी नानी नहीं थी क्या? वो नानी गाली है कोई सर? नानी is an honor. यही तो कह रहा हूं. This is what I'm saying. यानी he has sunk to such depths, and there is no answer from these people. I am just an individual. I can only tweet, and I'm doing it. मगर आपके अपने लोग नहीं हैं जो उसको पकड़ सकते हैं, इसकी बेइज्जती कर सकते हैं, ताकि इनके लोगों को पता लगे कि दूसरों के पास भी हाथ है, सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं है जिसमें तुम मार रहे हो चुपेड़े लोग. So this is a complete failure, I think, of the media team, and it needs to wake up. It needs to wake up, and pretty soon. I hope so. तो ये लॉन्ग मार्च जो है इसका, मतलब पहले ये कह रहा था कि मैं 4 को पहुंच जाऊंगा. अब ये कल इसका स्टेटमेंट था कि इट माइट टेक अनदर 8 to 9 days टू गेट देयर. और जो उसका गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन जैसे लोग कह रहे हैं कि अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, तो वो उससे क्या अंदाजा होता है कि डिले क्यों कर रहा है वो 8 दिन 9 दिन, जबकि उसके पास मोमेंटम वो कह रहा है कि मेरे पास है. तो वो डिले क्यों कर रहा है? राजी डिले इसलिए कर रहा है that A, he is waiting for a face saving, something. B, he doesn't have that kind of strength. I mean, if you can show 100,000 people in Gujranwala, so what? 10,000 or even 4,000 in that गली, साथ गाड़ियां और लाइटें और ये वो, so what? हर शाम को पंजाब का हेलीकॉप्टर आता है, उसको उठा के लेके जाता है अपने घर वापस मजमान पार्क. अगले दिन 2 बजे फिर वहां से टेक ऑफ करता है, उसको ले आता है 2:30 बजे उतारता है गुजरावाले के पास, और फिर वो कोई नाच कर, गालियां दे, ये कर वो कर, फलाना कर, 10 बजे फिर चल के वापस चला जाता है. I mean, why is he going like this? अभी सुना है यहाँ से जाएगा सियालकोट से वजीराबाद, हो सकता है नारोवाल भी चला जाए. Just to delay and show people in that one particular town के इतने खड़े हैं मेरे साथ. इससे जो है उसकी जो है मोमेंटम वीक नहीं होगा? मतलब अगर इतना 9 दिन 10 दिन से इसको सर्कस को चाहता रहेगा तो पीपल विल लूज इंटरेस्ट, और इसका जो है मोमेंटम कमजोर हो जाएगा अगर खत्म नहीं होगा तो. इसमें वो ट्रिक यही है ना, that you should just go from one town to another, from one little town to another, to a third, to a city. Every 3 days you should change or 2 days you change your location. और वहां पे जो लोग हैं वो आ जाते हैं तमाशा देखने.
लोकल अब वो लोग, तो फिर साथ तो कोई नहीं चलता ना। साधु को कौन देगा खाना if it's one a long caravan coming? It's all a lot of nonsense. That's what I'm saying. This is just nonsense. It is just smoke and mirrors. It is just war, and it seems the present government is falling for it, and so are people. कि ये बहुत बड़ा मार्च है फलाना ढमका ये उसके पास ये ऑफ कोर्स ही हैज बिग फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग तो जैसे आपने खुद कहा जब ये ईसी का फैसला आया कौन सी फॉलोइंग, कौन से लोगों ने बाहर जाके कुछ खुदा ना खास्ता और मार्च में भी जो लाहौर लॉन्ग मार्च जब शुरू किया तो लाहौर में जो है वो क्राउड अच्छा था लाहौर के अंदर लिबर्टी में, लेकिन उसके बाद तो इट वाज थिनिंग आउट ऑल अलोंग, जो रावी पुल उसने क्रॉस किया तो yeah, it's just local people who gather for that tamasha for the 2 or 3 hours that he's there before he gets onto his helicopter and goes back to Lahore. It is just that town. गुजरावाला के लोग हाँ निकले, ओके गुजरावाला के कितने होंगे, चंद हजार, गुजरावाला से 12 मील पहले रुका है वो, exactly. So yeah, it's all nonsense. It's all nonsense. It's all cyber, and he is just making use of it to heap more abuse onto the government and its officials. तो सर इसी की ये इसकी वीकनेस नहीं शो करता है। मियां नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट अभी आया, पहले गवर्नमेंट ने कुछ कहा कि हम इलेक्शन पे बात कर सकते हैं, इस किस्म की कोई थोड़ा सा उन्होंने लीनियंसी शो की थी, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट ट्वीट आया था कि कोई इसको कंसेशन नहीं देनी, कोई इसको रियायत देने की जरूरत नहीं है, जो बंदा जो है वो 1 लाख का वादा कर 2000 बंदा नहीं ला सका। तो उससे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट की पोजीशन जो है वो काफी हार्डन हो गई है और वो इससे एंगेज नहीं करना चाह रहे, तो इसके बाद इसने जो है वो शुरू किया है। तो डू यू थिंक ही इज लूजिंग ऑन दिस लास्ट, बिकॉज इसके बाद दिस इज द लास्ट कार्ड ही हैज? Yes, of course. Of course he's losing. Again, by the way, going back to Mian Nawaz's statement, it was very timely and I'm glad he gave it. लेकिन इसका जो है ना वो जो what will happen at the end, it depends on how strong the pawwa is of the 9,000 ton gorilla जिसे मैं कहता हूँ deep state में जो छुपा हुआ है, वो कितने गोरिल्ले हैं, 1 है 2 है 10 है 20 है मुझे नहीं पता, और कितनी उनकी स्ट्रेंथ है इसके साथ, because I've always maintained that this is an effort to dry clean him. I still maintain that the deep state wants to go towards the presidential form of government, where they will have a pliable person like this man, and the deep state will pull the strings. I still believe that. Let's see how the government now comes out with it and actually defends the parliamentary form of government, because हमारा मुल्क इतना diverse है और इतनी इसमें nationalities हैं और languages हैं कि the presidential system will finally shatter this country. पहले कर चुके हैं, अयूब खान की डिक्टेटरशिप जो थी, जो नाम सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम पहले भी हो चुकी है, बिल्कुल वी सॉ द कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल। और खुद अयूब खान ने, मतलब यू एंड आई रिमेंबर दैट, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने बुलाई थी जिसमें मुजीब को उसने रिहा भी किया अगरतला साजिश केस में, और पिंडी में मीटिंग हुई, उसमें खुद एग्री किया था उसने कि नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है सेटअप जो है पार्लियामेंट्री होगा। Absolutely, yeah, sure. That's what happens, you know. We keep repeating our mistakes. Musibat ye, we go on repeating our mistakes. From crisis to crisis was a book written by a gentleman called Baron. Hang on, I forget his name. He was an Englishman who used to live in the Sindh club, and he wrote this book for Pakistan, From Crisis to Crisis. ये 50s की बात, वो ही आज चल रहा है, from one pothole to another, from one pothole to another. Don't know whether we are left or right or up or down. It's so very sad, so sad. तो इसकी वजह क्या है, मतलब इज इट इसकी मुल्क की तामीर में कोई खराबी मुज़मिर है कि इसको सीधा ही नहीं हो सकता, इसमें कोई लीडरशिप का प्रॉब्लम है, इसमें कोई कंसेंसस है ही नहीं इस तरह से मुल्क के बारे में, वजह क्या है? मतलब बेसिक्स है, उसी पे कंसेंसस नहीं है। सिर्फ एक वजह है भाई जी, एक वजह, just one, and that is repeated army interventions in our system of government, repeated.
repeated martial laws, repeated emergencies. Just look back and see this: 3 steps forward, 4 back, 3 steps forward, 10 back. जो भी advancement हुई है, except for when Pakistan first came into existence and we got Mangla and so on and so forth when Ayub Khan was there. But that was when everybody else wanted a stable Pakistan. उसके बाद जो भी advancement हुई है, it's happened during civilian times, whether it's social emancipation, which happened in Bhutto's time, whether it's the motorways, whether it's electricity, you name it. It happened during civilian times, and we were going forward. And even in Benazir Bibi's time, then in Nawaz Sharif's time, especially when they came together with a charter of democracy. वो एक बहुत बड़ा दिन था. The 18th Amendment was a big step forward. It's a big thing. But then again, I think you said last time that when one civilian government handed over power peacefully to another one, it rang alarm bells. And within the deep state. So you're absolutely right. So that's what it is, nothing else. You have to have more democracy to make it perfect, not less of it. You can't keep tripping it up. और खास करके अभी जो हुआ है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट ने या डीप स्टेट ने पॉलिटिशियन को गालियां दे के, इमरान खुद कह रहा है ना कि वो उन्होंने मुझे बताया ये सारा, गालियां दे के, और आपने जो उनके थे चहेते जर्नलिस्ट जो कि आज करोड़पति हैं और कई उस मुल्क से बाहर भी चले गए हैं, आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है, उनको इस्तेमाल करके गालियां दे के पॉलिटिकल लीडर्स को, और इसको कहा कि यही एक है हमारा, यही है 15 साल ना 23 साल में ये आपने बनाया, ये नमूना. इधर तो द लास्ट होप जिसको जलाए थे, ही इज द लास्ट होप. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ही इज द लास्ट होप. Can you imagine the last hope who doesn't know the first thing about manners and courtesy? I wonder if I've said this before. His Majesty the King of Saudi Arabia is talking to him. मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते यही बात हुई थी. But he's standing there receiving the guests. तो ये जाके हाथ मिलाता है, and while he's still talking to him, he walks away. ये ना सिर्फ उम्र में वो बड़े हैं आपसे, बल्कि वो he's the King of Saudi Arabia, for God's sake, His Majesty, और आप ये करते हैं उनके साथ. Just walk away while he's still talking. तो इसको तो सेंस है ही नहीं ना भाई. This is the whole thing. It doesn't have sense. He's a discourteous man. He's a rude man. He's boorish. He has no empathy for anybody. अरशद शरीफ का कितना इसने यूज किया उस बेचारे की और दरवाजे पर नहीं किया ना. इसका जो बेस्ट फ्रेंड था जो कराची में फौत हुए थे, क्या नाम, नईम उल हक, उधर नहीं क्या बहाना बनाया कि सेक्रेटरी जनरल यूएन आया हुआ है. अरे सेक्रेटरी जनरल यूएन तो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी काफी है उससे बात करने के लिए, फॉर द 5 hours that you had to go to कराची. पर इसमें नहीं है. He doesn't have the empathy. He just doesn't. सर, ये नया आर्मी चीफ का जो सिलसिला है, मतलब एक चीज जो लोग बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्यों अनाउंस नहीं कर रही, व्हाई द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज स्टिल नॉट फॉरवर्ड. क्योंकि अगर वो नाम अनाउंस हो जाता है, अब तो 1 महीने से भी कम रह गया है, देयर आर ओनली 28 days लेफ्ट, तो अगर वो नाम अनाउंस हो जाता है तो लॉट ऑफ डस्ट विल सेटल. तो उसमें क्या, what stops the government, what stops the military, defense ministry not to move? Defense ministry तो थोड़ा ही काम है इसमें. This is the prime minister, really. Yes, वो notification करेगी defense ministry, पर है काम सिर्फ prime minister का. फाइल तो वहीं जाएगी ना सर. फाइल मैं समझ गया. I'm just saying कि हमारे defense ministry, we know how powerful it is. हाँ जी. तो अच्छा, मैं चलते लेट मी जस्ट लिटिल एनेक्डोट. वो एक 20 साल पहले 15-20 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, IPSIP, India Pakistan Soldiers Initiative for Peace, in which I was a member. My late friend, God bless his soul, lovely man, Brigadier Rao Abid Hamid, वो हमारी तरफ से वो सिर्फ करता थे, हालांकि चेयरमैन को बनाते थे, लेफ्टिनेंट जनरल को, बट ही वाज द एक्चुअल पर्सन. और उस तरफ से उनकी राज्यसभा की मेंबर थी, आई फॉरगेट हर नेम, दीदी हम उन्हें कहते थे, आई फॉरगेट हर नेम, शी वाज फ्रॉम दैट साइड. तो हमारी अपॉइंटमेंट हुई, वी वर इन दिल्ली टू मीट द देन डिफेंस मिनिस्टर
Pranab Mukherjee, Shri Pranab Mukherjee. So we went to the defense ministry. अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर है. अच्छा देयर इज नो सेपरेट अच्छा नो फिजिकल डिस्टेंस नहीं है. it's in that same south block area. आर्मी हेडक्वार्टर भी वहाँ है, दूसरे भी वहीं है. एनीवे हम गए तो आगे 4 चीफ्स बैठे हुए. अच्छा. Chief Army Staff, Chief Naval Staff, Chief of Air Staff, and there was one more. I think the Coast Guard है या क्या है. Anyway, I thought there were four full generals sitting there. Full generals, that rank. And we also went in. तो हमारी बारी पहले थी. अच्छा. So 8 or 10 of us were taken in to see the defense minister. हम कोई 10-15 मिनट बैठे उनके साथ फिर गए. वापस आए तो फिर इनकी बारी थी तो फिर ये गए इन जनरल की. बढ़िया ना. तो जरा फर्क है. बहुत फर्क है सर. फर्क तो बहुत ज्यादा है. इसलिए मैंने कहा as to नाम क्यों नहीं कर रहे. I don't know. There might be something there also. I don't know. I really can't tell. But you can announce, of course, you can announce the name even now, and he takes over whenever the present chief retires. You can. Why they're not doing it, I am mystified. तो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि they are in a small minority, but लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाजवा is not going anywhere. ये भी कुछ लोग कह रहे हैं. I am also among them. अच्छा. So what I have to say, I am also about it. Would you like to let us know what is the basis of your this thesis? Just a feeling. Just a feeling. Achha. It's just a feeling. That's all I can say. Honestly, it's not that somebody's told me, or if it's good, I'm a straight and forward enough person to say so. Then I would be sure, but I'm not sure. But I have a suspicion. What the Americans call gut feeling. Gut feeling. That's right. Gut feeling. Gut feeling. Actually, seriously, Raiji, I'm glad we're talking about this. No matter whether General Bajwa stays or another general takes over, no matter what, I just fervently hope and pray. As a senior citizen now, I'm towards the evening of my life. I've said it before. I beg the army to please stop interfering in politics. Stop engineering. You've seen the result of your latest engineering. I mean, please don't do it. Stay within the confines of the constitution. आपको सब कुछ ये मुल्क देता है. जो आप मांगते हैं देता है. अभी पीछे कितने बिलियन रुपीस नहीं मिले आपको? 50 billion दिया सर. ठीक है. और आप हमारे यहाँ, we need you. But please, ये पॉलिटिक्स आपका काम नहीं है. आप अपनी ट्रेनिंग करें, अपने FDLs की हिफाजत करें. हम हमेशा आपके साथ. And you're not alone. We are with you. So let's hope they listen to it. लेकिन अभी तो सर इसने जितना mess create किया हुआ है, they have to take the blame for that and take responsibility for that. This project Imran है, ये इनका this was their most ambitious project, जिसके लिए उन्होंने इतना काम किया है इसके लिए और इतना build up किया है उसको. तो अब ये he has become a monster. तो उसको indeed, and what pain they made others go through. What utter pain they made others go through, whether it was the People's Party or the PMLN or Maulana or whoever, ANP, क्योंकि उनको तकलीफें मिली है, सब कुछ किया. And just to build up this one man and see the result. I mean, ये तो वो Frankenstein monster से भी बुरा निकला. It's really defies description how they could possibly do it. And then to say now that we have now decided not to take part in politics, well, very good. तो फिर हम हमेशा ठीक कहते थे ना कि you do take part in politics. So I'm very glad it's happened. Joint press conference जो उन्होंने की है DGISP और DGISI ने, और it was unprecedented, very unusual, and जो stuff जो बातें उन्होंने की हैं वो भी they were really eye opener. लेकिन उसका impact तो नहीं हुआ. No, well, we can only hope for better sense to prevail. ये अच्छी बात है, जरा कुछ निकली है बात, खुद भी कुछ माने हैं. हमें तो हमेशा मालूम था. We are not automatons or exactly stupid. I mean, यहाँ इसी में मैं कहता हूँ सर गंजा इसी मुल्क में किया.
So one knows this. One has known this inherently of how army chiefs have treated elected prime ministers. How Beg would refer to Benazir. I can't even mention it here. Yeah, वो तो leave it. शहीद होगी बेचारी. मैंने उन्हें वो कहा भी था. I knew her well enough to tell her that. She said, "Really?" I said, "Yes. I'm so sorry." But there you are. They've always thought themselves a clip above everybody else, and it's bad. It's really bad. We are सारे हम पाकिस्तानी हैं. We all love this country. कोई आपको ज्यादा इस मुल्क के साथ प्यार नहीं है हमारे साथ. बिल्कुल. सर अभी एक मिनट, इट्स अ र्यूमर, और लगता है कि ये किसी ने जानबूझ के छोड़ी है कि ये एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 3 दिन से चल रहा है ये. तो वो क्या है ये ऐसे ही फीलर है कुछ, क्या है? बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या है ये? Again, Raji, what can you say? What can you say in a country like ours? हाँ, ये भी हिंट था कि वो जो साहब हैं इमरान खान के फेवरेट, वो एड्रेस करेंगे, वो भी एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे वगैरह. अल्लाह जाने. Anything can happen. Anything can happen, as I say in the citadel of Islam. सब कुछ हो सकता है. So let's see. Exciting times, which is again. हाँ, interesting times really. The Chinese curse, as we've said, may you live in interesting times. तो बस अल्लाह माफ कर दे हमें यार, अल्लाह माफ कर दे इस मुल्क को. अल्लाह में तो माफ कर दे. आज एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था किसी और प्रोग्राम, ये नया दौर पे. लेट्स गिव क्रेडिट कि वो नाजी है ना, व्हाट्स हिज फुल नेम, नजीर नाजी साहब के बेटे. अच्छा, उन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया था कि एवरी डे 17,000 चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न इन पाकिस्तान एवरी डे. तो उनके कोई स्कूलिंग का, कोई नर्सरी का कोई बंदोबस्त हो रहा है? स्कूल बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहा है? यानी एवरी ईयर आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग above the total numbers today of Norway and Sweden. बताओ. तो राय जी, ये तो एक this is such a population bomb which is exploding already all around us. नहीं सर, वो तो ये बात तो बिल्कुल है, ये इस पे डिस्कस नहीं किया जाता किसी भी प्रोग्राम में, करंट इशू को लेकर बैठ जाते हैं. लेकिन जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, ये पॉपुलेशन जो इंक्रीज है, इट्स एक्चुअली मेड पाकिस्तान अनगवर्नेबल रियली, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं है, जो जिसे वेल्थ जनरेशन कहते हैं वो नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है हमारे पास, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब लॉन्ग लिस्ट टू गो. तो वो कोई है ही नहीं है, तो उसमें तो इंस्टेबिलिटी जो है इनबिल्ट. मतलब इमरान खान और नो इमरान खान, जो इंस्टेबिलिटी है, दिस इज इनबिल्ट. True, absolutely true. Like somebody said yesterday, there was a tweet कि मैं 10 बोरी लेके आया ये खाद गंदम की बिजाई के लिए, तो 17,000 रुपए की, और अगले दिन 10,000 की हो गई थी. हाय मेरी किस्मत. अच्छा, हाँ. जर्नलिस्ट ही है. 10 बोरी DAP या 33 के लाया और वो 20 हो गई, whatever, but the point is that half the next day. And so everything is in flux, you see. Everything is in flux when everybody is looking towards what Imran Khan Saab is doing or is being allowed to do. वो फिर उठ जाती है ना. सर ये प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंच गए हैं, और वहां से अब क्या मतलब सीपैक के रिवाइवल का सुना हो रहा है. M1 जो रेलवे वाला है उसका, कराची की में जो भी ऑरेंज ट्रेन बन रही है अंदर लाहौर पैटर्न, उसकी जो है अप्रूवल हो गई है. तो व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट चाइना टू गिव अस, स्पेशली जो उनका 23 बिलियन लोन हमने देना है, वो मैच्योर हो रहा है, तो उसका डू यू थिंक दे विल गेट समथिंग फ्रॉम देयर, और Well, I think they'll put the CPEC thing back on track. वो भी तो derail कर दी थी ना उन्होंने. खास करके जब वो जर्नैल साहब, जिन्हें पापा जानी भी कहते हैं, जी आसम, हाँ जी, हाँ, तो जब वो थे उधर तो काफी derail हुई थी वो.
There are things for and against CPEC, of course, but generally speaking, for a country in our straits, I think we need that sort of thing with safeguards. So उसको definitely reselect होगी, it'll be put back onto the rails, and I hope something good comes out of this for both countries. And ये अच्छी बात है that Prime Minister Jawad Sharif is active and he's traveling the world, trying to repair the relations that Imran Khan saab virtually destroyed. And so ये अच्छी बात है. One has to reach out. तो अभी तो प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम भी तो है ना हमारा सर. ये अब सी पैक पे है, मतलब सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सी पैक की थी, उसको हमने खुद कटल कर दिया, पेमेंट में हमने डिले कर दिया, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हम नहीं कर सके. तो ये भी तो प्रॉब्लम है. अब ये जो गवर्नमेंट है ये कल को होगी नहीं होगी, इलेक्शन के बाद कैसी गवर्नमेंट बनेगी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, नोबडी नोज. तो जो फॉरेन पावर्स हैं जो इकोनॉमिक एड देने वाले हैं वो भी तो पूछते हैं भी आप कल को करेंगे क्या. If you walk away from agreements like this, तो credibility का प्रॉब्लम तो है हमारा. बिल्कुल. उसके अलावा राइडी जो इस वक्त हो रहा है, जो जीटी रोड पे इस वक्त हो रहा है, वो नहीं देख रहे. They are also seeing that. So they will have their own people looking at it very carefully. And yes, so इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अब पूरी दुनिया के सामने हम बादरों की तरह बिहेव करते हैं. Or I mean, it's the 5th largest country in the world, for God's sake. You know, a huge population. We must be near 240 million by now. 220 कहते हैं, but कब हुआ था census? It was ages ago. Census हमारा ठीक होता भी नहीं है. It's a huge country with a huge population, with a good people, great countryside from the mountains down to the sea. But there you are. We make such fools of ourselves. And the sooner we stop it, the better. Really. चले सर, क्या कर सकते हैं. तो दुआई है जो हर हफ्ते हम जब भी हम मिलते हैं हम करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को बचा ले, अभी भी बचा ले इस शर से, और कहीं हम डेमोक्रेसी की तरफ, प्योर डेमोक्रेसी की तरफ चले. And this is also an appeal to all our institutions, whether it's the judiciary or anybody else. कि आपको भी देखना चाहिए जो कुछ हो रहा है, and take the same action that you took earlier with other people, maybe not as severe, but यहाँ लगता है कि there's acquiescence in looking kindly upon what Imran Khan Saab does. सुप्रीम कोर्ट में भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है May 25 को जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, वो फिजल्ड आउट एंड ऑल दिस, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रेड जोन में नहीं आएंगे, फिर ये आ गए. तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में अनयूजुअल सा है कि उनने जो लॉयर्स हैं जिन्होंने वो सबमिट किया था अंडरटेकिंग कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो उनसे भी कहा कि आप अपना जवाब दें, और इमरान खान से भी कहा. तो डू यू थिंक समथिंग माइट कम आउट ऑफ इट, और ये फिर वो भी फिर I don't think so, because they've already ruled partly on it, haven't they? They've already not ruled in their remarks, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो remarks ही देती है, और रिमार्क्स भी चलते हैं काम, तो जजमेंट तो नहीं चलते, रिमार्क्स भी चलते हैं काम. हाँ वही ना. तो वो very unfortunate, sir. Isn't it very unfortunate for the judicial decorum कि जजेस जो है वो रिमार्क्स देते रहते हैं which make headlines, and जो असल केस है, जो जजमेंट है, उसमें तवज्जो नहीं होती. Now that is why lay people like you and I can then infer from those remarks कि judgment क्या होगी, क्योंकि वो remark तो यही थे ना, if I'm not wrong, कि हो सकता है उनको मैसेज ना मिला हो. यानी पूरे ये चैनल्स, सोशल मीडिया भरा हुआ था, लेकिन उन बेचारों को, खान साहब को नहीं मिला पैगाम, तो हो सकता है वो गलती से चले गए. So the only thing is, again, it's an appeal to my lords के मुल्क बड़े मुश्किल दहाने पे पहुंच गया. We are in a very difficult situation. तो मेहरबानी करें, that's all one can say. Sir, we can conclude on this on dua.
मे गॉड हेल्प अस। और यस भाई जी, मे गॉड हेल्प अस। आप खुश रहें, सारे सुनने वाले खुश रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। फिक्र नाउ थैंक से यू तरफ राज जी, से गॉड थैंक यू, ब्लेस, गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिक्र नाउ की तरफ से सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।